नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन व्हाट आर स्मार्ट गोल्स। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्ट गोल्स वो गोल्स होते हैं जो कि आपको मदद करते हैं टू अचीव वॉट एवर यू वांट। अगर आपका गोल एक स्मार्ट गोल है तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस गोल को अचीव कर पाए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्मार्ट गोल्स होते क्या है। तो SMART, स्मार्ट, what it means is S, your goal needs to be specific. M, your goal needs to be measurable. A, your goal has to be achievable or attainable. R, your goal needs to be realistic. And T, your goal needs to be टाइम बाउंड। सो दोस्तों, इसी पे हम अब ज़्यादा इलॉबरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये स्मार्ट गोल्स होते क्या है। सो दोस्तों, लाइक आई जस्ट सेड कि फर्स्ट लेटर ऑफ द स्मार्ट गोल्स इज S। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लाइफ में आपके गोल्स जो है वो जनरलाइज ना हो, वो बहुत स्पेसिफिक हो, ताकि उन गोल्स पे आप काम कर पाओ और उन गोल्स को आप अचीव कर पाओ। गुड गोल्स कैन नॉट बी टू एम्बिशियस और दे कैन नॉट बी टू वेग। दे हैव टू फॉल इन लाइन विथ योर specification. They have to be in line with your thought process. So for example, दोस्तों, instead of saying, generalizing that, I want to lose weight, what you need to say is, I need to lose 5 kgs or I want to lose 10 kgs. So you are very specific about, those kgs that you need to lose, and then probably you'll be in a better position achieve those goals while you are trying to exercise well, or like reduce your calorie intake or whatever. So your goals have to be very 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 specific. Next dosto, your goal has to be measurable. What it means is, your goals cannot be relatively कि कल जो मैं कर रहा था उससे आज मैं बेहतर कर रहा हूँ, या जो मैं कर रही हूँ उससे कल जो कर रही थी उससे कम ज़्यादा अभी कर रही हूँ। नहीं, इट कैन नॉट गो दैट वे। सो योर गोल्स नीड टू बी मेजरेबल। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, अगेन, जो मैंने वेट लॉस का आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे 10 किलो कम करना है तो उसमें से ऑलरेडी मैं 5 किलो कम कर चुकी हूँ। यू कुड मेजर दोज 5 kgs on a weighing scale. So your goal has to be measurable. Why I say this, to measure your goal, what you could do is you could set a few milestones. So, for example, on an whole, मुझे अगर 10 किलो कम करना है तो उसमें से मैं उस 10 किलो को 4 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, और हर महीने आई विल वर्क ऑन those that 2.5 kgs that I need to lose. इस प्रकार से probably मैं 4 महीने में 10 किलो लूज कर पाऊंगी. So that has to be your thought process. Also, you could use this measuring wala thing, anywhere, be it in your personal life, probably while asset building. Like if you want to buy a property, so you could use it that way. You could use it in your professional life. You could use it everywhere. As long as your goal is measurable, it means that, you are getting closer to achieving what you want to achieve in life. And hence, this is a very important part of having a smart goal. Next, dosto, your goal needs to be achievable. So, dosto, challenging yourself is very good. But challenging yourself with something that you cannot accomplish, like you cannot decide the smartness or, the capability of a fish by its ability to climb up a tree, right? So in the same way, your goals need to be achievable for what you are as a person. So अगर आप फाइनेंस के बंदे या मार्केटिंग के बंदे और अगर आपका गोल मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो ये सही है, लेकिन आप ओलंपिक्स नहीं लड़ सकते विद अ डिग्री इन MBA मार्केटिंग. So you need to realize that the goals that you keep or that you have in your mind
need to be achievable. While big and exaggerated goals could be really motivating for some given point of time. But if you are not good at it, if you do not have a achievable or attainable goal, you will eventually fail at it because you are not probably trained to achieve those things. So you need to be very, very sure that the goal that you have should be achievable, should be attainable. Next, dosto, it is very important for your goal to be relevant. What I mean by that is, अगर आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, तो जो भी आपका बड़ा गोल है, उसको आप जब डिवाइड करते हैं into smaller goals, these goals need to be relevant to that bigger goal, right? Like your co-workers, you yourselves, everybody has to be part of that, a process which helps you to reach towards that bigger, brighter goal. So likewise, dosto, till you do not have a goal that is relevant to your life, to your lifestyle, to whatever you want to achieve, it will not contribute to your ultimate success. And thus, it is very important to have a relevant goal in life. And finally, dosto, your goal needs to be time bound. You need to have a goal जो कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में ही आप अचीव करें. बिकॉज अगर कोई भी चीज़ प्रोलॉन्ग्ड है या कंटिन्यूसली चल रही है, तो प्रॉबली जब तक आप वो चीज़ अचीव करते हैं तब तक उस चीज़ का महत्व ही नहीं बच जाता. सो फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू रीड बुक्स, सो यू हैव टू हैव अ टाइम बाउंड थियोरी. लाइक अगर आप 12 बुक एक साल में पढ़ना चाहते हैं तो आप महीने की एक बुक खत्म करें. सो दैट इज़ द वे यू allocate your time to achieve that particular goal. So दोस्तों, it is very important that आपका जो भी goal हो, it has to have a time limit, it has to be time bound. Also दोस्तों, I use this time bound wala funda in the goals that I try and achieve every day. So like I have a macro plan, I have a micro plan in it, and I execute my every day according to the micro plans that I've decided. अब दोस्तों, मुझे ये ऑन अकाउंट ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क को ज़्यादा टाइम देते हैं तो वो टास्क उतना ज़्यादा टाइम लेगी. व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट वर्क अब्जॉर्ब्स, इट स्प्रेड्स ओवर ऑल द टाइम दैट यू हैव. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि आज के दिन में मुझे 5 वीडियो बनाने हैं और मैं एक वीडियो को फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे देती हूँ, तो 5 वीडियो बनाने के लिए मुझे 10 घंटे लगेंगे, राइट? एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ 10 आवर्स ऑल्सो आई रिक्वायर एन 11th आवर एक्स्ट्रा. बट एट द सेम टाइम अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं सिर्फ आधा घंटा एक वीडियो को दूंगी, तो हो सकता है कि आधे घंटे का पौने घंटे में मेरा वो वीडियो बने. बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा काम है वो मैक्सिमम 4-4.5 घंटे में उन 5 वीडियोज़ का बन जाएगा. सो वॉट इट मीन्स इज़ कि जो वीडियो मैं प्रॉबेबली आधे घंटे या पौने घंटे में बना रही हूँ, उस वीडियो को मैं 2 घंटे लगा के भी बना सकती हूँ. सो वर्क स्ट्रेचेस ओवर ऑल द टाइम दैट यू गिव इट टू. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके गोल्स जो है वो टाइम बाउंड हो, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े एंड यू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू हैव. सो दोस्तों, ये थे हमारे स्मार्ट गोल्स. एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपके गोल स्मार्ट है, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अचीव दीज गोल्स. सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.